Yes, now I think I'm audible. Okay, I've reduced the volume. Now I think I am audible, perfectly audible. So let's start with our discussion. Just one second. Yeah. So the topic for today is modification of a root, and we are studying the second chapter. I mean the second part of morphology of flowering plants. Let me just see if I'm audible or not. So we'll start with the modification of root. Hello, hi everyone. Okay, I can see. Yes, let me just verify that if I am audible. Let me just see this. Can you just check if I'm perfectly audible? Yes, is it audible? Okay, fine. Hi everyone. Hello, Parth Gupta. Okay, hi everyone. चलिए. Let's. I'm pretty fine, and let's quickly start with the session now. We are discussing the morphology of flowering plants, and the session goes like this. So can you see this picture is actually of a banyan tree, and you can very well appreciate that banyan trees are going to have these. What are these are the roots of banyan tree. Okay, these are the roots of banyan tree, and banyan tree is taking the support from this modification of root. I think this topic has been removed from the recent NCERT, but then we'll just quickly see. Okay, right? Yeah. So all right, let me just remove this. Correct. So modification of root, just write down somewhere at the side if you have the space. Okay. So yeah, so I've given you the example of banyan tree. Okay, I've given you the example of banyan tree, and all right. So yeah, so there are some examples like taproot of carrot and turnip and adventitious roots of your sweet potato. They are actually swelled up to help for storage of food. Okay, so taproots of carrot, taproot of turnip, and adventitious root of sweet potato. Okay, sweet potato. So if you'll focus on the last and the first letters, the things are going to be very easy for you. See here, this is taproot. Okay, see, T for tap, the taproot of carrot. T for turnip. Okay, and adventitious roots. Okay, I hope I am audible. Yes, it is working fine, right? Yeah, it is working fine at my end. Some problem with your network. Yeah, okay, no, it's working completely fine from my end. Just start writing that you have got taproot. Okay, you have got something which is called as, one second, yeah, you have got something which is called as taproot. So T for taproot, taproot of carrot and taproot of turnip, and adventitious, this is S for S, that is sweet potato. So adventitious root of sweet potato, and from S you can remember swollen. Why these are swollen? For storage of food. Okay, for storage of food. So this is one line. This line has to be learned from NCERT. Okay, so not very difficult, just I'm revising it for you. So if you are having taproot, T for taproot, T for carrot, then you have got TURNIP, turnip, and you very well should remember that S and T come together. So S and T come together means adventitious. Okay, adventitious. S. So S for what? S for again sweet potato, and then everything is responsible for what? For storage. Okay, S for storage. Okay, so all these things are actually something which is required for your understanding, for your learning, and for your retention. ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत बहुत important है. ठीक है, ओके. एंड हैंगिंग तो मैंने बताया ही है कि ये जो
hang कर रहे हैं structures from the banyan tree. Okay, can you see these hanging structures from the banyan tree? All these structures are immensely important, and these are actually the example, the banyan trees. These are called as prop roots. Okay, these are called as what? Prop roots. And I always state students like this, that P and B look very similar. So if this is P and you just add on like this half circle, this becomes B. So P and B are very similar. So banyan tree and prop roots are easy to remember. Okay, banyan tree and prop roots are very easy to remember. And then you have got one more example. Let me share with you. You have got something which is called as now stem. The stems of maize and sugarcane have supporting roots. Okay, so maize and sugarcane are also going to have the supporting roots. So this is also, you have to remember that from S is starting the sugarcane, then S is the supporting root. Okay, and maize you can remember MAISE. Okay, or simply we used to remember like this. Like for example, if I draw a table, this table in English, I mean in Hindi, it is called as maize. Okay, so it is called as maize. And for example, you can remember sugarcane like this. So this is sugarcane and this is the support. So sugarcane is going to have which root? Sugarcane is going to have supporting roots. And also the plant of maize is also going to have which roots? Maize is also going to have the supporting roots. Okay, coming out from the lower nodes of the stem. Okay, lower nodes of the stem means what? For example, this is sugarcane, this is upper node, this is lower node, and something supporting is going to come out from the lower nodes. Okay, so this is something supporting roots is this. Okay, after that please remember, in this is sugarcane, this is supporting. Okay, and can you see I have 1 2 3 4 in the diagram? I've tried to split them. Okay, I've tried to split them, so that's why this is called as slit roots. Okay, slit roots. So the example of maize, the example of sugarcane, the example of supporting roots which are coming from the lower nodes are the slit roots. Okay, slit roots. And L for what? L for coming from the lower nodes. Okay, L for coming from the lower nodes. So I'm going to give you some time so that you can you can write this part. Okay. All right, coming on to the next example, that is in some plants like rhizophora, which are going to grow in swampy areas. Many roots come out on the ground and grow vertically upwards. Such roots vertically upwards, these are called as pneumatotrophs. And pneumo means what? Pneumo means air. Okay, pneumo means air, which helps what? Which helps to have the oxygen for respiration. So let me just draw rhizopus. So starting from R, this is something, if you can remember, the things are going to be very easy. Okay, so this is the method to remember this. Can you see this? This is R. So R for what? R for rhizopus. And then the root is going to grow vertically upwards. Okay, the root is going to grow what? Vertically upwards. Why? Because they want oxygen. Okay, they need oxygen. So they are what? They are pneumatotrophs. These are what? These are pneumatotrophs. Okay, so just remember this, that these are pneumatotrophs. Okay, so they just require oxygen. Okay, so this is how we can remember rhizopus. Rhizopus is a pneumatotroph because it requires oxygen. Clear? So can you see the roots are going to go upwards? Roots are going to grow upwards. These are the roots which are going to grow upwards. Okay, vertically upwards. Easy to remember. Okay, just quickly write down so that next we can go on to the next page. Okay, yeah, written. So I request you to please write down side by side. Okay, so I've given you these examples. Can you see? This is turnip, this is carrot, this is sweet potato. Carrot and turnip are having which roots? They both are going to have the tap roots. And then the sweet potato is going to have adventitious. Okay, this adventitious, both of them are, I mean all three of them are for storage. And then pneumatotroph in the rhizophora. Pneumatotroph in what? In the rhizophora. And asparagus is also an example of storage root only. Okay, asparagus is also an example of storage only. Okay, but now this point has been taken out. Okay, so just quickly write it down.
Okay, and please remember asparagus. Okay, can you see this ending in S word, asparagus? So asparagus, G for go down, S for storage. So as if something is getting stored in the go down. So this is the storage and go down which you can remember. Okay, clear? Is it clear? Okay, I hope it is written also. Write asparagus also, write rhizopus also. Okay, so rhizopus, which is a pneumatotroph requiring oxygen, root grows vertically. Clear? Yeah. So coming on to the stem now. Okay, coming on to the next part, that is called as stem. So you know very well that stem is something which is, okay, I think we have discussed this diagram before. If not, let me just revise it for you. That you have got root system and shoot system. Okay, root system and shoot system. So the root system is something which is having the primary root, secondary root and tertiary root, and everything else is a shoot system: flower, fruit, stem, leaf. Okay, bud. Node and internode is important, so let me just teach you what is node and what is internode. Okay, what is node and what is internode. So node means the one which is where the budding is happening. Okay, so node means where budding is happening, and internode means it is the distance between the two buds. Okay, so node means where the budding is happening, and internode means where the is the distance between the two budding parts. Okay, coming on to the next part, that is what are the stem. Okay, so let me just tell you, I've already discussed with you that the stem grows from the plumule of the embryo. Okay, so plumule is something which is going to form the stem. Okay, and the stem has got the nodes as well as the internodes. The region where leaves are born are called as nodes. Okay, where leaves are born are called as nodes, and where internodes are the portions between the two nodes. Okay, internode means between the two nodes. And after that, remember the buds. Now buds can be terminal or can be axillary. So buds can be terminal or axillary means, now for example, this is the stem. Okay, for example, this is the stem, and this is, yeah, so they can be, the buds can be terminal or the bud can be axillary. Okay, can you see these are the terminal buds? Okay, terminal buds, and the one which is I am trying to form from the green part, this is the axillary bud. Okay, so there are two types. Axillary, axilla means what? Do you know what do you mean by axilla? Underarms is an example, is actually axilla. So can you see the angle which is being formed between the two? So that is the underarm and that is the axilla. So bud can be axillary bud as well as terminal bud. So these are the two buds which you have to understand. Okay, so stem is generally green and later becomes woody, dark brown. Main function of the stem is to spread out the branches, which is going to be the leaves, the flowers, the fruits. It's not important. Yes, which structure is responsible for conduction of water, mineral and photosynthesis? Is conduction is actually performed by stem. Okay, so conduction word, if they are asking you, conduction means conducting means taking from one place to another. Okay, right? So this will be the example, this will be the function of stem, conduction. And some stems, of course, they can store food, they can support, they can protect, and vegetative propagation. So support is not important, protection is also, yeah, protection is sometimes important, and vegetative propagation. So if I just summarize this, first of all, stem is something that is going to grow from plumule. Second, it is going to have the nodes and internodes. And what do you mean by node? Node is something where the leaf is going to get blossom out, leaves are going to grow.
Then buds are terminal and axillary bud. And then what is the function of the stem? It is the conduction. But please remember that stem can be used for two purposes. Now I am going to teach you this. This is actually very important. See, S for stem, S for storage. Okay, some stems are used for storage. Some roots are also used for storage. We have already discussed. Okay, so some stems are used for storage. S for stem, S for storage. And then some stems can be used for vegetative propagation also. Now, what do you mean by vegetative propagation? Yes, what is the meaning of vegetative propagation? See, propagation. What do you mean by propagation? Propagation is actually growing new. Okay, growing new plant by using old plant. या old part. Okay, old plant का part से आप नया कुछ तो grow करते हो. तो हम क्या करते हैं, जैसे रोज में भी होता है ऐसे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, इसको कट करते हैं, कट करने के बाद में नई जगह लगा देते हैं. ओके, और नई जगह जब लगाते हैं तो ये ग्रो कर जाता है. तो स्टेम को कट करके दूसरी जगह लगाना न्यू प्रोपगेशन इसमें होता है. तो इसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम बोलते हैं. ठीक है, और बस याद करने के लिए बता रहा हूँ. देखो, स्टेम एक तो स्टोरेज हो गया, एक स्टेम से याद रखो सेकेंड, और सेकेंड मतलब ये दो डंडियाँ लगा दी वी की, समझ में आ गया. ऐसे स्टेम, ऐसे सेकेंड, और ये वी. वी मतलब क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वी मतलब क्या? वेजिटेटिव propagation. V मतलब vegetative propagation. Coming on to what are the modifications of stem. Okay, what are the modifications of stem? So let's quickly understand about the modifications of stem. देखो, the stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified different structures, like underground stem of potato, ginger, turmeric, zamikand, colocasia are modified to store food. Okay, so storage of food is done by all these things. Okay, so firstly you have got storage of food, and what all structures are there? Potato, ginger, turmeric, zamikand, colocasia. Okay, all these things. Okay, so can you tell me any mnemonic to remember? Yes, no mnemonic. So yes, please see if a mnemonic can be there from the storage. Okay, so see how to remember like this. Yes, remember like this, because we are discussing about the storage of food. So you have to remember, because we are discussing about storage of food, so remember some food items starting from all these things. So you have to remember a table, where you are at getting pizzas, where you are getting garlic bread, where you are getting taco. Okay, where you are getting, yes, sandwich, where you are getting cheese chili. Yes, cheese chili. And yes, something starting from Z. Nothing starting from Z. Zamikand. Okay, so this is the name of zamikand. I know it is a little difficult thing to remember, but still I'll try to teach you once again. So just try and remember that you have got something which is called as potato, ginger, turmeric, zamikand, colocasia. Okay, so these things are something which you have to remember. Potato, of course, you eat potato, and potato is having a lot of food in it, so potato is something which you can easily remember. Garlic, turmeric. Okay, ginger, turmeric, and then zamikand, colocasia. Okay, so these are the 6 examples which you have to remember always. Okay, I know ki this trick, actually this trick is G for is not garlic, G is actually ginger only, right? So it might be a little confusing, so I think I should change the mnemonic for you. Okay, then I'll use this mnemonic. Please take care. Please take care going for gym and swimming. So if you are going to gym, if you are going for swimming, please don't eat a lot of food. Okay, please don't eat a lot of food when you are going for gym and swimming. So what I'm trying to teach you is
Please take care going for gym and swimming. So please matlab P is what? P is going to be your potato. Take, T for turmeric. Then care, C for your colocasia. What I have told you? Colocasia. C for colocasia. G for ginger. Zim, J for jamikand, and S for swimming, S for sweet potato. Okay, so these are the important things which you have to understand. Then next important part is tendrils. Okay, so tendrils which develop from the axillary buds are slender and spirally coiled and help the plant to climb. Okay, so tendrils are used for climbing. Do we have this in new NCRT, this topic? Okay, this topic is not in new NCRT, so something which is very important only I'm going to teach you. So tendrils are tendrils are these type of structures. Tendrils are these type of structure. These are called as tendrils. So tendrils are going to be there, and which are required for what? Required for climbing. Okay, and these are seen in what? These are seen in your cucumber, your pumpkin. So cucumber and pumpkin is something which is daily served in the diet of salads. Okay, so in salads we generally consume the cucumber, we consume the pumpkins, and in fact one more thing which we consume is called as watermelon. Okay, watermelon. So please remember this is important, that cucumber, pumpkins and watermelon has got climbing. So can you I think they have, yeah. So see here, these are the example of tendrils. This picture you can clearly see in the tendrils. Then of course ginger. Colocasia is Arabi. Okay, so colocasia is nothing but Arabi, so you can remember this. Colocasia is Arabi. Okay, and potato, of course, right? So this and this picture I've already discussed with you. Coming on to the ones which is the thorns. Okay, one more important thing. Okay, I'll teach you. Then comes the thorns. Okay, so you must have seen like thorns. Where will you see thorns? So if you have guava and bougainvillea, okay, if you have guava and bougainvillea at your garden, so then there you can go and check the thorns. Okay, now the one important part, that T for tendrils and T for thorns. T for tendrils and T for thorns, both of them are going to develop from axillary bud. T for tendrils, T for thorns, both of them are going to grow from the axillary bud. Okay, they are going to grow from where? These are going to grow from the axillary bud. This is something which is important. And remember, thorns example guava as well as bougainvillea. Guava and bougainvillea. So this A, can you see guava is also ending from A, bougainvillea is going to end from A. So both guava and bougainvillea are going to end from A. Okay, so guava and bougainvillea coming from, guava is actually a citrus fruit. Okay, guava is actually a citrus fruit. So they are going to come from where, they are going to have thorns. Okay, they are going to have what? They are going to have thorns in them. Coming on to the next part, that is stem is flattened like opuntia, or you have got euphorbia has got a fleshy stem. Okay, the good part is that they contain chlorophyll, and since they contain chlorophyll, they carry out photosynthesis. So in what stems you are going to have photosynthesis? So let me just tell you, photo you have got something euphoria, and then opuntia. Okay, opuntia, and both of them are going to have photosynthesis. Okay, because they have got chlorophyll. So what do you mean by euphoria? Euphoria is actually an English word which actually means happiness. So when do you get happiness? By clicking a photo. So whenever somebody asks you to click the photo, you will feel very happy. And even if you can't remember, just remember two things: opuntia is having P, euphoria is having P, and photosynthesis is also going to have P. So these P for photosynthesis, P for euphoria, and P for opuntia. Okay, so P, all these three you have to remember and kindly note it down. Okay, so euphoria, opuntia, both of them are responsible for photosynthesis. Clear? Then you have something which is called as grass and okay, so so grass and strawberry is the example. Grass and strawberry. So okay, I always write like this. Okay, I'll write here GRASSTRAW berry. So I can write, okay, grass and strawberry.
So grass and strawberry is going to spread to new places. Okay, grass and strawberry spread to new niche. Okay, so you must have seen जहाँ कोई नहीं होता वहाँ घास होती है, देखा है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ घास होती है। और घास और स्ट्रॉबेरी ऐसे हैं कि अगर नए निश जहाँ पर ओल्डर प्लांट्स मर गए वहाँ पर नई घास आ जाती है, जहाँ पर भी ओल्डर प्लांट्स मर जाते हैं वहाँ पे कौन आ जाती है, ग्रास आ जाती है। फिर हमारे पास और एग्जाम्पल क्या है, मिंट एंड जैस्मिन। ठीक है, मिंट एंड जैस्मिन जो होता है वो क्या करते हैं, डाउन चले जाते हैं, आर्च डाउन टू टच द ग्राउंड। ओके, ये डाउन चले जाते हैं, कौन कौन, मिंट एंड जैस्मिन। ओके, मिंट एंड जैस्मिन। सो रिमेंबर दिस इज अ लव स्टोरी ऑफ टू लव बर्ड्स। लड़के का नाम था मिंटू, लड़की का नाम था जैस्मिन। ओके, और कुछ दिन अपना प्यार व्यार जताने के बाद में दोनों के दोनों अंडरग्राउंड हो गए। ओके, दोनों के दोनों अंडरग्राउंड हो गए। सो मिंट एंड जैस्मिन आर द टू प्लांट्स, दे आर गोइंग टू टच द ground, they are going to touch the ground. Okay, then you have got a beautiful plant. Okay, I'll try and show you this plant. So the name of this plant is short internodes. First of all, understand short internodes, and each node bearing the rosette of leaves and a tuft of roots. It is found in aquatic plants like pistia or एकॉर्निया। ओके, एकॉर्निया और पिस्थिया, पिस्थिया एकॉर्निया। ओके, तो क्या होता है, एक तो इनकी स्मॉल स्मॉल सी इंटरनोड्स होती हैं इस तरीके की, और ईच नोड बियर्स लीफ, दिस इज लीफ एंड रूट्स। लीफ है, रूट्स हैं, किस में है, एक्वेटिक प्लांट्स में। नाम क्या है, पिस्थिया। ओके, पिस्थिया एंड इकॉर्निया, पिस्थिया इकॉर्निया। ओके, पिस्थिया इकॉर्निया। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये देखो, पी से पिस्तिया, पी से पानी, पी से पिस्तिया, पी से पानी। ओके, सो पी से पानी, पानी, ई से इकॉर्निया, पी से पिस्तिया, ई से इकॉर्निया। तो जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, चाहे उनका तुम पूरा नाम मत याद करो, बट एटलीस्ट इतना याद करो कि जैसे पिस्तिया, इकॉर्निया, पीई, पीई मतलब पानी। ठीक है, इतना याद रह जाए, इतना भी याद रहा तो भी चलेगा। ठीक है, और then something which is going to come obliquely upwards. Okay, coming obliquely upwards, which is going to give rise to leafy shoots, or simply obliquely upwards. ये obliquely upwards आने वाले कौन कौन से हैं, they are banana, pineapple, chrysanthemum, banana, pineapple, chrysanthemum coming obliquely upwards, coming obliquely upwards like this. Okay, oblique, so O B, ठीक है। अभी ऑब्लिक को हम आगे से क्या बोलेंगे, ऑप्लिक। ओके, ऑप्लिक बोलेंगे। सो ऑप्लिक मतलब क्या, इस ओ को क्या करो, इस ओ को कट कर दो दो पार्ट्स में, ये सी बन गया। सो सी ओ रो रहा है कि मेरे को काट दिया, सो नाम क्या है, क्राइजैंथेमम, क्राइजैंथेमम। पी से कौन है, पाइनएप्पल, पी से कौन है, पाइनएप्पल। बी से कौन है, बनाना, बी से कौन है, बनाना। ओके, सो वेरी इजी टू रिमेंबर, बनाना, then chrysanthemum, pineapple, banana, chrysanthemum and pineapple. Okay, so जितना भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है एक बार बस सुन लो, थोड़े बहुत निमोनिक रख लो, क्योंकि अगर आ जाता है एग्जाम में तो हमें एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत जो है ना इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड इवन इफ यू डोंट नो देन ऑल्सो इट इज कम्प्लीटली फाइन, देयर इज नो सच इशू, राइट। बट हाँ, as of now you can just remember this. So coming on to the next part is the leaf. So the leaf is a something something. So just remember about the leaf क्या होता है, बोला है leaf is a flattened structure born on the stem. ये हर किसी को पता है। It develops at the nodes, bears a bud in its axil. ये आपको पता होना चाहिए कि it bears at a node at its axil. Okay, so it should bear a node. So can you see this? This is actually leaf. Okay, लीफ कहाँ पे बन रही है, इसका नाम है नोड, और नोड के अंदर में क्या है, एक्सिलरी बड, कहाँ पर, एक्सिल में। ओके, तो इसको याद रख लेना। ओके, सो लीफ इज गोइंग टू कम आउट इन द नोड एंड इट्स गोइंग टू बियर द बड एट इट्स एक्सिल, देन एक्सिलरी बड इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ ब्रांच। सो एक्सिलरी बड इज गोइंग टू डेवलप इनटू ब्रांच, एंड please write down, this is important, that axillary bud is going to B for bud, B for branch. Okay, so B for bud, B for branch means it is grows into branch. Okay, so axillary B से bud, B से branch.
Okay, so it is going to grow into a branch. After that you have got leaf originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order. They are most important vegetative organs for photosynthesis. This everybody knows, but leaf originate from shoot apical meristem and arranged in the acropetal order. In the acropetal order. Now I will teach you this thing. देखो acropetal का क्या मतलब होता है? Acropetal means going away. Okay, going away. तो leaf जो old होंगी, करेक्ट, वेरी गुड, यस यस, आई विल टीच यू. सो जो ओल्ड होंगी वो एपेक्स पे रहेंगी, राइट, और जो न्यू लीव्स होंगी वो बेस पे रहेंगी. न्यू लीव्स आर गोइंग टू बी एट द बेस एंड ओल्ड लीव्स आर गोइंग इनटू द अपेक्स. दिस इज, या यहाँ पे निकली फिर ये आगे चली गई, और आई एम टीचिंग उल्टा, राइट. Yeah, so basically I'm really sorry, the new ones are going to be at apex and the old one are going to be at the base. क्योंकि देखो पहले इतना सा ग्रो किया था तो यहाँ पे एक लीफ आ गई, फिर ये इतना ग्रो किया तो अब नई लीफ आ गई, ठीक है. सो न्यू इज गोइंग टू बी एट द अपेक्स एंड द ओल्ड वन इज गोइंग टू बी एट द बेस. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल ऑर्डर, पहली चीज. और दूसरी बात, ये कैसे ग्रो करती हैं? शूट मेरिस्टेम्स. ओके, दे आर गोइंग टू ग्रो हाउ? दे आर गोइंग टू अपाइकल शूट मेरिस्टेम. अपाइकल शूट मेरिस्टेम लीफ यहीं से बनती है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, लीफ कैसे बनती है? लीफ बनती है अपाइकल शूट मेरिस्टेम से. अपाइकल शूट मेरिस्टेम, अगर याद हो बचपन में एक बुक आया करती थी जिसका नाम होता था स्लैम बुक. यस, सो SLAM, S फॉर शूट, A फॉर अपाइकल, M फॉर मेरिस्टेम, L फॉर लीफ. ओके, so please remember slam book is the mnemonic to remember the apical shoot meristem. Apical shoot meristem. Okay, now leaf has got some parts which is called as, first of all, leaf base, then it has got a stipule and then the lamina. So stipule, lamina and leaf base. Okay, so leaf consists of three parts: leaf base, petiole and lamina. Sorry, petiole, leaf base and lamina. petiole, leaf base and lamina, whereas stipule जो है, that's not a stipule is not a part of the leaf. Okay, it's not a part of the leaf, but they may be a small leaf like structure which is called as stipule. Okay, so what is stipule? Stipule are leaf like structure. Okay, leaf like structure, two leaf like structure. So if this is a whole big leaf, there will be two leaf like structures, and these leaf like structures are called as what? These are called as stipule. Okay, so two leaf like structure, lateral structure, which are called as stipule. So can you understand that petiole, lamina and leaf bud are the parts, whereas stipule is not the part. So if you can remember my name, PARVLUTHRA, that means L for leaf, and leaf has got leaf lamina, leaf base, and P for petiole, whereas stipule is something which is another leaf. Okay, now let us understand about the different variations which we have to understand. So one by one I will teach you different variations. So what are the different variations? Remember, in monocots में क्या होता है? लीफ बेस जो है वो एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड करके वो क्या बनाता है? एक शीट बना देता है जो कि कवर करेगी स्टेम को पार्शली और होली. मतलब शीट बनती है मोनोकॉट्स में. और फिर हम बात करेंगे कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ठीक है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जिनका जो लीफ बेस है वो क्या हो जाता है? स्वोलन हो जाता है, और वो क्या बना देता है? स्वोलन होकर के बनाता है पल्विनस. फिर हम बात, तो ये आपको लीफ बेस के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ देखो ध्यान से, लीफ बेस जो है वो क्या हो सकता है? लीफ बेस जो है वो क्या हो सकता है? लीफ बेस आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप उसको. एक आप बोल लो उसको मोनोकॉट का लीफ बेस, और एक आप बोल लो उसको लेग्यूम्स का लीफ बेस. ठीक है, तो लीफ बेस आपका अब दो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया. एक आप उसको बोल लो मोनोकॉट का लीफ बेस, और एक आप बोल लो उसको लेग्यूम का लीफ बेस. तो जो मोनोकॉट का लीफ बेस होता है वो क्या बनाता है? मोनोकॉट का लीफ बेस क्या बनाता है? शीथ बनाता है. ओके, शीथ बनाता है. और लेग्यूम का लीफ बेस क्या बनाता है? वो स्वेल्ड हो जाता है. ठीक है, वो क्या हो जाता है? स्वेल्ड हो जाता है. तो देखो, जहाँ दो बार एल आ रहा है वो एल का है, जहाँ दो बार एल आ रहा है वो एल का है, मतलब स्वेल्ड हो रहा है तो वो लेग्यूम हो जाएगा. ठीक है, और वो जो स्वोलन होने के बाद उसको क्या बोलते हो आप? उसको आप लोग क्या बोलते हो? पल्विनस. उसको पल्विनस बोलते हैं. उसको
देखो नीट वाले कंफ्यूज करने के लिए ना ऑप्शन में पेटियोल डाल देते हैं, पेटियोल आंसर नहीं है, क्या आंसर है, पल्विनस आंसर है। इसीलिए कहते हैं चारों ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है, ए बी सी डी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल ऑफ देम। अब पेटियोल का क्या काम है, ये देखो, ये तो यहाँ से पता ही लग रहा है कि पेटियोल ने क्या कर रखा है, पेटियोल ने इसको पकड़ के रखा होगा। ठीक है, पेटियोल का यही वर्क है कि वो उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, लेमिना। लेमिना होता है लीफ ब्लेड, ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो, दैट लेमिना इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। और वहाँ पर वेन्स होती हैं, वेनलेट्स होती हैं, जो क्या बोलते हैं, मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है उसको मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, जो मिडिल प्रोमिनेंट लीव होती है, वेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट and acts as the channel for transport of water, minerals and food materials. This I think you very well understand. Okay, coming on to the next part, which is called as venation. But before going to the venation, let me tell you that the shape, the margin and the apex and the surface and the extent of excision of lamina अलग अलग होते हैं। बट अब ठीक है, इस पे से इतना क्वेश्चन नहीं आता, तो वी विल नॉट गिव मोर weightage to this. Coming on to venation, I hope venation is there in new NCRT. Yeah, so coming on to the venation part now, so what is important in venation, so remember venation is the arrangement of veins. Okay, venation is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of the leaf, that is termed as venation. Okay, so what is venation, venation is the arrangement of the veins in the leaflet. Okay, अब इसमें क्या है, देखो इसमें ना अलग अलग चीज़ें हैं, तीन तरीके की वेनेशंस हैं। एक तो होता है रेटिकुलर, इसमें देखो रेटिकुलर बना रखा है इन्होंने, रेटिकुलर मतलब होता है नेटवर्क लाइक। ठीक है, रेटिकुलर का क्या मतलब होता है, नेटवर्क। ओके, रेटिकुलर इज नेटवर्क। ठीक है, फिर आता है पैरेलल, जहाँ पर वो पैरेलल चलेंगी। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट की होती हैं वो रेटिकुलट होती हैं, और जो पैरेलल होती हैं वो किसकी होती है, मोनोकॉट्स की होती है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे भाई, देखो मेरी ज़िंदगी के दो ही असूल थे, या तो मुझे डॉक्टर बनना था या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना था, या मुझे डॉक्टर बनना था या मुझे प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मतलब डी फॉर डाइकोटिलेडोनस, आर फॉर रेटिकुलर, तो फिर जाहिर सी बात है कि मोनोकॉटिलेडोनस की कौन सी हो जाएगी, पैरेलल वेनेशन हो जाएगी। ठीक है, सो निमोनिक लिख लो, डॉक्टर और प्राइम मिनिस्टर। ओके, डॉक्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट डाउन द निमोनिक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ लीफ के बारे में। तो देखो अभी लीफ क्या होता है, एक लीफ जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी की तरह, सॉरी तुम्हारी नहीं, आम लोगों की ज़िंदगी की तरह, और लीफ जो है वो कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ का क्या मतलब है, देखो अगर उसका लेमिना इज एंटायरली और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डज नॉट टच द मिडरिब, okay, then it will be called as a simple leaf. Okay, then it will be called as a simple leaf. Okay, let me check अगर इन्होंने simple leaf का डायग्राम, इन्होंने नहीं दे रखा simple leaf का डायग्राम। देखो जैसे ये है ना, ये ऊपर वाली मैंने बना रखी है, दिस इज अ सिंपल लीफ। ठीक है, अगर तुम्हें एक एग्जाम्पल लेना भी है तो ये ऊपर बना रखा है ना, ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ, देखो पहली बात तो लेमिना इसका पूरा है, कहीं से कटा नहीं। मान लो अगर कटेगा भी ना, तो उसका जो कट है ना, ये वाला कट, ये मिडरिब को टच नहीं करेगा। समझ में आ गया, ये मिडरिब को टच नहीं करेगा, इसको सिंपल लीफ, सिंपल बोलते हो, सिंपल लेमिना बोलते हो। ठीक है, लेकिन अगर व्हेन द इंसिजन, रिमेंबर दिस, व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिब, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, कैन यू सी दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ लीफलेट, स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स जो बन गए हैं, और लीफलेट अगर बन गए हैं तो फिर हम लोग को याद रखना है कि वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। अब कंपाउंड में भी दो तरीके की है, एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड, एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से समझना कि भाई एक पिन्नेटली कंपाउंड का क्या मतलब है, पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब होता है नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। ओके, the number of leaflets which are present on a common axis, इसको हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड, जिसका नाम होता है रेचिस। ओके, जो कि मिडरिब होता है, जैसे कि नीम के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ मिडरिब। ओके, सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस है, मिडरिब है, और नेम क्या है इसका, नॉन एज रेचिस। और ये किसका पौधा है, ये नीम का पौधा है। ठीक है, लेकिन लेकिन पाल्मेटली में क्या होता है, लीफलेट आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एट द टिप ऑफ द पेटियोल,
जैसे कि सिल्क कॉटन में। तो ये देखो, ये क्या था, ये पेटियोल था। ओके, सो टिप ऑफ पेटियोल के ऊपर है, और टिप ऑफ पेटियोल में, और एग्जाम्पल क्या है इसका, सिल्क कॉटन। ओके, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बड़ी सिंपली समझ लो, पिन, पिनलेटली में पिन वर्ड आ रहा है। सो पिन वर्ड का क्या मतलब है, पिन मतलब एक सिंगल एक्सेस होगा, जैसे एक सुई होती है, सिंगल होती है तो सुई, इसी तरीके से हमें याद रखना, पिनेटली कंपाउंड, सिंगल एक्सेस, मिड रिब, जिसका नाम होता है रेचिस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, नीम है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नीम, नीम। तो देखो मैंने लिखा ना सिंगल, तो सिंगल में दो वर्ड आए, एन और आई, और इधर से इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, एन और ई। ठीक है, सो एन और आई और एन और ई, इसको याद रखो, सिंगल, और इधर से ये नीम हो गया। और फिर हम टिप ऑफ द पेडिकल पेटियोल पे आते हैं, टिप ऑफ द पेटियोल पे। सो टी फॉर टिप हो गया, और एस फॉर सिल्क कॉटन हो गया, और एबीसीडी में एस और टी जो है वो साथ में आता है। सो पिनेटली कंपाउंड समझ में आ गया, पाल्मेटली कंपाउंड आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो कि बहुत बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो, जो पेटियोल होता है ना, उसका एक एक्सेल एक्सेल होता है। तो पेटियोल के एक्सेल में तो चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, दोनों के अंदर में बड होगा, लेकिन इट इज नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड। मतलब क्या बोलने की कोशिश है, देखो यहां तो आपको फिर भी दिखेगा, यहां दिख रहा है बड, यहां तो बड दिखेगा, यहां तो बड दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको बड नहीं दिखेगा। ओके, यहां पर आपको बड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो समझ में आ गया, वो पिटियोल के एक्सिल में तो है, लेकिन वो हर लीफलेट के एक्सिल में नहीं होगा, हर लीफलेट के एक्सिल में वो नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलोटेक्सी। तो जस्ट चेक इन योर न्यू एनसीईआरटी इफ दे हैव गिवन फाइलोटेक्सी और नॉट गिवन। ओके, कमिंग ऑन टू फाइलोटेक्सी। तो भाई फाइलोटेक्सी का क्या मतलब होता है, फाइलोटेक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। ओके, पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। व्हाट इज वेनेशन, कि भाई वेन्स का क्या अरेंजमेंट है, बट फाइलोटेक्सी क्या है, फाइलोटेक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, pattern of arrangement of leaves, or you can simply say arrangement of the leaves. Okay, so there are three example: alternate pattern, opposite pattern, world pattern, alternate pattern, opposite pattern, and world pattern. ठीक है, so mnemonic to remember the phyllotaxy is P for phyllotaxy, P for you can remember my name, and everybody who sees me speaks wow. So wow for W for world, A for alternate, O for opposite. W for world, A for alternate, O for opposite. So now I will teach you one by one. So what do you mean by alternate? So can you see they are placed alternatively. Like alternatively means एक इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, तो ये alternating है। ठीक है, alternate type of फाइलोटेक्सी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी में सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड। ओके, सिंगल लीफ इज गोइंग टू अराइज एट ईच नोड इन एन ऑल्टरनेट मैनर। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड sunflower. Okay, china rose, mustard and sunflower. Okay, sunflower, china rose and mustard. Okay, so just remember alternate. Okay, so alternate, so alternate you have to remember with the help of तीन examples. The examples are china, चाइना में उगा सूरज, सन, ओके, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्त लगता है, कैसा लगता है, मस्त लगता है। ठीक है, सो चाइना में उगा सूरज मस्त लगता है। ठीक है, चाइना में उगा सूरज मस्त लगता है, और चाइना, प्लीज रिमेंबर दिस इज ए इन द एंड, और ये इधर से ए से क्या याद रखोगे, ऑल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपोजिट की। सो ऑपोजिट के अंदर में क्या एग्जाम्पल है, ऑपोजिट मतलब देखो, अ पेयर ऑफ लीफ इज गोइंग टू अराइज एट ईच नोड, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक एक पेयर जो है वो निकल रहा है, इधर भी इधर भी, तो ये अ पेयर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसमें होता है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ओके, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, इसमें ऑपोजिट दिखता है आपको, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा में ऑपोजिट। तो देखो इसमें कैसे याद रखोगे, ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट। ओके, और ऑपोजिट का एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। okay, so calotropis, so okay, let me just write it for you, calotropis, so calotropis has got op, opposite has got op, और अगर आप ध्यान से देखो
तो सी और जो जी है वो एकदम सेम दिखते हैं, है ना। जो सी लेटर है और जो जी लेटर है वो एकदम सेम दिखते हैं, और क्योंकि सी और जी सेम दिखते हैं तो हमें कैलोट्रोपिस को और सी और जी को जो है वो एक साथ कर देना है। सो सी फॉर कैलोट्रोपिस हो गया, जी फॉर क्या हो गया, जी फॉर हो गया गुआवा। ओके, तो कैलोट्रोपिस एंड गुआवा जो है वो एकदम सेम दिखते हैं। अच्छा, अब वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड मतलब अगर एक पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा लीफ निकल रही हैं तो वो वर्ल्ड होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है? वो वर्ल्ड हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्स्टोनिया। ओके, एल्स्टोनिया। सो इमेजिन, इमेजिन वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड का एग्जाम्पल क्या है? एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। सो एल्स्टोनिया, ए एल फॉर ए डबल एल, ए एल ऑल मतलब सब, सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे, सारे के सारे एक ही जगह पे उग गए आकर के, ठीक है। ऑल, सारे के सारे एक ही जगह पे उग गए, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वर्ल्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट पढ़ते हैं हम आज के टॉपिक का, जिसका नाम है आपके पास में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जो कि एक्चुअली दिया नहीं है एनसीईआरटी में। तो जस्ट मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता करके इसको ख़त्म करूँगा। देखो भाई, सीधी सी बात है, टेंड्रिल वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो टेंड्रिल जो है वो आपका किसके लिए काम में आता है? क्लाइंबिंग के लिए काम में आता है। उसके बाद कैक्टस, ठीक है, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्प्लीन है, ये कैक्टस का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, दैट इज द कैक्टस। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। टेंड्रिल क्लाइंबिंग के लिए होता है, स्पाइन जो है वो कैक्टस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में अनियन और गार्लिक की जो लीफ है वो फूड स्टोर करती है, ठीक है। अनियन एंड गार्लिक की लीफ, ओके, वो आपको पता है। हम बोलते हैं ना, प्याज का छिलका होता है, वो छिलके को आप उतार सकते हो, ठीक है। तो नहीं याद रह रहा तो सिंपल याद करो, कुछ तो लोग कहेंगे, और लोग कहते रहते हैं हम खाते रहते हैं, लोग कुछ भी बोलते रहे हम खाते रहेंगे। सो लोग कहेंगे मीन्स लोग, एल फॉर लीफ, ओ फॉर अनियन, जी फॉर गार्लिक, और हम खाते रहेंगे। खाते रहेंगे मतलब क्या है? खाते रहेंगे दैट मीन्स फूड स्टोर करती है, ठीक है। क्या करती है? फूड स्टोर करती है, फूड स्टोरेज के ये काम में आती है। ओके, देन और क्या है? पिक्चर प्लांट की और वीनस फ्लाई टैप की जो जो लीफ है, ठीक है, पिक्चर प्लांट की और वीनस फ्लाई ट्रैप की, ये दोनों ना इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो भी लीफ होती हैं। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों की भी लीफ होती हैं, ठीक है। जो इनके ढक्कन होते हैं पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप के, वो तो आप ये मेरा नाम से याद कर सकते हो, PARV, P फॉर पिक्चर प्लांट, V फॉर वीनस फ्लाई ट्रैप, और L से मतलब मेरे सरनेम से लूथरा, एंड L से यू कैन रिमेंबर दीज आर ऑल्सो लीफ। और फिर किसी में छोटू भी होता है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक ऐसी ऐसी प्लांट है जिसके अंदर जो उनकी लीफ होती है वो बहुत छोटू होती है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया हैज़ गॉट शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़े टाइम के लिए आती है, सॉरी, छोटू नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए आती है। शॉर्ट लिव्ड लीफ, ऑस्ट्रेलियन, ओके, शॉर्ट लिव्ड लीफ, ऑस्ट्रेलियन, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है, छोटी सी होती है उसकी लीफ, ठीक है। और याद करने के लिए ऐसे याद करो, ये ए आ, ये तो छोटे बच्चे याद करते हैं ना, आ। सो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, आ, छोटे बच्चे याद करते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए इसकी लीफ रहती है, ठीक है। लिखो इसमें आ, पिक्चर प्लांट में मेरा नाम लिखो और वहीं से आपको याद रहेगा ये। ओके, क्लियर। चलिए, अब हम थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस के लिए एक बार बात कर लेते हैं इस आज के लेक्चर में, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस हमने ख़त्म कर लिया तो हमारा फ्लावर का पार्ट बचेगा। उसके बाद फ्लावर के बाद हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे, थोड़ा सा सीड पढ़ेंगे, और उसके बाद में 5 फ्लोरल फैमिलीज़ करके हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं कल दोपहर का एक सेशन लेके इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एक बार इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड क्या होती है? मॉडिफाइड शूट होती है, ये हमें पता ही है।
जहाँ शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि लीफ क्या होती है, लीफ होती है SAM, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अगर शूट अपाइकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर में चेंज हो गई तो फिर, अगर शूट अपाइकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गई तो वो क्या बना देती है, वो फ्लावर बना देती है। ठीक है, वो क्या बना देती है, फ्लावर बना देती है। और होता क्या है, देखो ये जो इंटरनोड्स होते हैं ना, इंटरनोड्स, ये इसमें कंडेंस हो जाते हैं, इलोंगेट नहीं करते, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, सो दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि इंटरनोड्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और अगर वो कंडेंस हो रहे हैं तो वो जाकर के क्या बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं। ठीक है, फ्लावर बना रहे हैं। और हर नोड क्या बना देती है, ये बना देती है, हर नोड क्या बना देती है, ये बना देती है। ये क्या बन गया, फ्लावर पेटल्स। ओके, ये क्या बन गया, फ्लावर पेटल्स बन गया। ओके, और जब भी ऐसा होता है तो ये अकेली होती है, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिटरी। ठीक है, जब भी ऐसा होता है तो ये अकेली होती है, दैट इज सॉलिटरी। तो फिर से बता देता हूँ, शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या डिफरेंस है कि इंटरनोड कंडेंस होकर के फ्लावर बनाते हैं, और वहाँ पर एक पत्ती उगती है जो कि फ्लावर की पेटल होती है, ना कि लीफ होती है। और फिर हम याद करेंगे कि ऐसा जब भी होगा तो वो सॉलिटरी होगा। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो सॉलिटरी होगा। तो ये जो डायग्राम है ये प्लीज़ बना लो कि इंटरनोड्स छोटे हो रहे हैं और हर नोड के ऊपर में पेटल उग रही है। ठीक है, ये डायग्राम प्लीज़ ड्रॉ कर लो कि हर नोड के ऊपर में क्या उगने वाली है, पेटल उगने वाली है। ठीक है, प्लीज़ ड्रॉ दिस इज नॉट गिवन इन NCERT आई थिंक। Okay, then you have got arrangement of flower is called as inflorescence. Okay, arrangement of flower is in, acha, inlay, arrangement of flower is called as flower, arrangement is called as inflorescence. Arrangement of leaf is called as that's arrangement of veins. Arrangement of phyllotex, correct. Phyllo means leaf, phyllo means leaf. So coming on to arrangement of flower is called as inflorescence. Okay, so there are different type of inflorescence. Okay, so you have got two major types. One is called as racemose and then cymose. In racemose, main axis continues to grow. The flowers are borne laterally, okay, or in acropetal succession. Whereas in cymose, the main axis terminates in a flower. Hence, it is limited in growth. So the flowers are borne in a basipetal order. Okay, so flowers are going to grow in a basipetal order. The main axis is going to main axis is going to what, main axis is going to terminate, that's not going to grow. So please remember racemose. Okay, so racemose is just like a race. Okay, racemose is just like what, racemose is just like a race, और रेस में सबको क्या करना है, आगे भागना है। सो रेसिमोस इज जस्ट लाइक अ रेस, रेस में सबको आगे भागना है, और सबको आगे भागना है मतलब the stem is going to grow, okay, or rather not stem, the axis is going to grow। और क्योंकि एक्सेस ग्रो करता है इसीलिए हमें याद रखना है रेसिमोज में ये सेकंड वर्ड ए आता है, और ए मतलब ये सब एक्रोलैटरल होते हैं, एक्रोलैटरल ग्रो करते हैं। ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं, एक्रोलैटरल, सॉरी एक्रोपिटल, कैसे ग्रो करते हैं, एक्रोपिटल ग्रो करते हैं रेसिमोज में। तो साइमोज में जो है वो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइमोज में उल्टा हो जाएगा। So can you see, this is actually racemose, okay, this is actually racemose, and here it is cymose, here it is cymose. Why it is cymose? Because can you see that it is not growing, it is getting terminated by the flower. Okay, so just write down that it is not growing, it is getting terminated by the flower। पर यहाँ देखो, यहाँ रेस लगी हुई है, ये अभी भी ग्रो करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये अभी भी ग्रो करने वाला है। तो इन दोनों डायग्राम्स के अंदर में प्लीज डाल दो जो भी चीज़ मैंने बताई है। ठीक है, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो यू कैन आस्क, प्लीज मार्क इन बोथ द diagrams about the racemose as well as cymose. Okay, so cymose, it is still growing. Okay, cymose is still growing, racemose is not going to grow. Okay, so thank you so much for joining the class, and I will see you tomorrow. God bless you. We'll meet tomorrow then.